And officers cannot go beyond certain limits. They will say, no, no, I am the SP. I am SSP. I am not supposed to go to police station. Why should I go? आप बताओ मेरे को कि जब ये सोनू कलावत स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया 18/11 को हुआ है। हाँ, तो इसने जानकारी मिलने के बाद क्या किया इसने फिर? इनको पनिश कर दिया इस केस में। They are decorated officers. भाई they dance to the tune of instructions and ensure that they overcome this hangover that they are IPS officers, therefore they are supposed to sit in air-conditioned offices only. Sir, as long as I'm in this post, I promise that my best efforts will be done, sir. I assure you, Honorable Court, that. What these additional SPs, SHOs, head constables, sub-inspectors, what are they doing? आप बोल रहे थे ना कि एक्चुअली इनिशियल घटना 2017 की थी, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ इन्हें यहाँ सस्पेंड करके हटा दिया। बाद में जब यहाँ कोर्ट से ऑर्डर हुआ डीजीएमपी के लिए कि आप यहाँ कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करें, तो इनको वही पोस्ट कर दिया। वो पोस्टिंग ऑर्डर किस तारीख? वो ऑर्डर नहीं है। ये जो ऑर्डर है जो आप थोड़ा तो मैं पढ़ता हूँ, इसमें क्या हुआ, उसको सब इंस्पेक्टर को इसलिए रखा SHO को क्योंकि उसको पहले का ज्ञान था, वो पहले पैरे में ज्यादा ही ज्ञान था। ये मैं कहना नहीं पढ़ रहा हूँ। चूंकि घटना एवं मुक्त अपराध इसी बात मुक्त अपराध की कायमी के समय निरीक्षक अभय प्रताप सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ होकर उनके द्वारा प्रकरण की प्रारंभिक विवेचना की गई। चूंकि निरीक्षक अभय प्रताप सिंह को उक्त प्रकरण की पूर्व से जानकारी है, अतः निरीक्षक को सच यातायात प्रभारी के पद से हटाया जाकर वही भेजा है, वही कर दिया। ये आप बताओ मेरे को कि जब ये सोनू कलावत स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया 18/11 को हुआ है। हाँ, तो इसने जानकारी मिलने के बाद क्या किया इसने फिर? इसने नहीं, भाई जिसको भाई ऐसा SIT हो गई सर, और SIT बघेल साहब के अंडर में कंस्टिट्यूट हुई। जो भी हो, ये आदमी को जस्टिफाई किया आपने ट्रांसफर करके वापस आरोन में पहले कि उसको पहले था, उसके बाद तो रहा ना नवंबर 19 के बाद। हाँ, ये रहा है तो ऐसा लग रहा है। हाँ, तो नवंबर 19 के बाद क्या किया उसने? 19 को ऐसा लग रहा है सर कि इसी के टाइम पे वो रिकॉर्ड हुआ उसका स्टेटमेंट। उसके बाद क्या हुआ? वी आर मोर कंसर्न विद क्या किया उसने? दैट आई हैव नोटेड। क्या नाम है ऑफिसर का? ये है अभय प्रताप सिंह। नहीं, और कुछ है, आशीष। यही है अभय प्रताप सिंह। अभय प्रताप सिंह है लॉर्ड, निरीक्षक अभय प्रताप सिंह, तत्कालीन थाना प्रभारी आरोन। और देखो आजकल कहाँ पे है वो भी पता चले। देवशास्त्र वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आड़े वहां पहुंच गए हो, किसी वो क्या होता है वो RTO के साथ लग गए हो। भाई प्राइस पोस्टिंग मिलनी चाहिए ना ऐसे लोगों को। हाँ, ये और सर ये जो इनकी पोस्टिंग की गई आफ्टर पनिशमेंट की है, इनको पनिश कर दिया इस केस में। they are decorated officers. भाई they dance to the tune of instructions. अब आपने देखा नहीं कल टीवी में क्या आ रहा, परसों टीवी में आ रहा था ना कुछ। अजमेर देखा था सर, अजमेर वाला देखा नहीं वो कल देखा था। हम भी टीवी देख के बोल रहे हैं आपसे। TI साहब कह रहे थे कि ये बोल दो। बिल्कुल वही है सर। देखा राव साहब आपने क्या स्थिति बन रही है? थोड़ा सा बोलिए आप इन लोगों को। ये तो एक सैंपल है हाई कोर्ट के सामने। ऐसे ऐसे कितने केसेस आपके यहाँ होंगे जो यहाँ पहुंच नहीं पाते। उनकी प्लाइट सोचो। You have more officers than constables, it appears. And officers cannot go beyond certain limits. They will say, no, no, I am the SP. I am SSP. I am not supposed to go to police station. Why should I go? My job is to ensure that if some minister comes, if chief minister comes, I am available to him. Protocol or take his instructions to ensure that persons are not uncomfortable named by them. Punctuality is so apparent when the political executives are here.
anywhere. But what about visiting the police stations? What about ensuring what these additional SPs, SHOs, head constables, sub-inspectors, what are they doing? There has to be review of investigation, a review of the functioning of the police stations. When will you give me all these details? The election is most important thing in India. But for election, the functioning of India is always imperiled. See, now elections are round the year. So this is a very pious incident in India that throughout year there is an election. You call it celebration, whatever you call it, but unfortunate part is it is at the cost of the public and public funds. Most important thing in India is holding of elections. Rest of the things will always take a back seat or would be lower in preference. Election is always at center stage, no matter what happens across country. I will not write detailed order today. I have given you all the points on which I need your explanations, and be careful. Don't try to put something more than what was there. Please don't do that. If there is a lapse, we are here to see that there is no recurrence of such situations. But we have to write something about the lapses, if any, only for the purpose so that the police force is revamped and you are not criticized in public domain. That is the purpose of calling you here. We have deliberately not called you DG, otherwise we would have called him also. But I thought it is always better to first talk to you because you are the immediate boss over these SSPs and SPs in this zone. Please take stock of situation and ensure that they overcome this hangover that they are IPS officers, therefore they are supposed to sit in air-conditioned offices only. Please tell them to go to the field, take stock of the situations, meet those poor villagers who suffer with a fear psychosis, unable to reach the police stations because of the fear of the SHO. Please, I request you. Sir, as long as I'm in this post, I promise that my best efforts will be done, sir. I assure you, Honorable Court, that we will do. I want it to be in system. Yes, sir. You being the head of the Chambal and Gwalior division or Gwalior division, please also tell your counterpart. I will, sir. Please do it. Otherwise, once the people get agitated now, Sir. and things are beyond their, if you test their patience, and it goes beyond that, it will be very difficult to control the mob. And you have seen the instances where police personnel were also given beating by the public at large. There are instances in India. I don't want such things to happen in Madhya Pradesh. Because there is a limit to contain yourself, the public at large. But we must see that you rise to the occasion and ensure that the trust and faith reposed on you is not betrayed. Yes, sir.